हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो अगले पॉइंट के हम डिस्कस करेंगे। ये है बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 का यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले ऑलरेडी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के सारे नोट्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखा है अपने चैनल में, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अगर आपको सारे पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे पीडीएफ मैं आपको वेरी रीजनेबल रेट में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे बात करते हैं डिफाइन अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द टास्क एंट्रस्टेड टू हिम। First of accountability creates the obligation for the maintenance of responsibility by the superior and the accompanying instances that the work performed must meet his expectations। ये 2018 में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्वेश्चन 2013, 2016, 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। यहाँ तक कि बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, वहाँ पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख के रखा है क्योंकि मैंने यही से इस आंसर को लिखा था अपने फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बीकॉम ऑनर्स में भी मिल जाएंगे जो आपको 12th में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए, फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और सबसे पहले बेसिस नेचर के ऊपर देखते हैं। डेलीगेशन इज इंडिविजुअलिस्टिक, फर्स्ट ऑफ इट इन्वॉल्व्स 2 पर्सन्स, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज टोटलिस्टिक इन नेचर, इट इन्वॉल्व्स डेलीगेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द डिपार्टमेंट और डिविजनल लेवल। उसके बाद देखिए कंट्रोल वेस्ट्स विद द डेलीगेटर और सुपीरियर। और यहाँ पे देखिए इन दिस सिस्टम टॉप मैनेजमेंट एक्सरसाइज मिनिमम कंट्रोल, फर्स्ट ऑल पावर्स आर गिवन टू कंसर्न डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स। उसके बाद देखिए नीड, delegation is essential to get things done by others. First, unless otherwise authority is delegated, it will be difficult to assign responsibility. And decentralization is optional because it is the philosophy of management. First, top management may or may not disperse authority. उसके बाद देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन डेलीगेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स विद द डेलीगेटर, फुल स्टॉप, ही कैन डेलीगेट अथॉरिटी एंड नॉन रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद इन डिसेंट्रलाइजेशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज अंडर हिम, फुल स्टॉप, ही इज रिक्वायर्ड टू शो बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द होल डिपार्टमेंट। उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस, डेलीगेशन इज रिक्वायर्ड एज रूटीन एक्ट एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइटल डिसीजन टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर हैंडलिंग मेजर एक्सपांशन प्लान्स। उसके बाद देखिए डिपेंडेंस, डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर डेलीगेशन, डेलीगेशन इज एसेंशियल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद परफॉर्मेंस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मे बी टेम्पोररी, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी इज गिवन परमानेंटली। उसके बाद स्कोप, डेलीगेशन मे बी ए लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड हेंस इट्स स्कोप इज लिमिटेड, एंड डिसेंट्रलाइजेशन शोज ए वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, देयरफॉर द स्कोप इज वाइड। उसके बाद देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एंड नंबर 1 देखिए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन ईच डिपार्टमेंट यूनिट और sections enjoys substantial powers. First off, they have the power to formulate their policies and programs. First off, it becomes difficult to coordinate the activities of various segments. उसके बाद देखिए दूसरा देखिए difficulty in control. Since different units work independently, it becomes difficult to control their activities. Top management will not be able to exercise effective control because it does not remain in touch with day-to-day activities of various segments. उसके बाद देखिए lack of able managers. Decentralization system will succeed only if competent persons are employed to manage various jobs in different segments. First, this system will fail if competent personnel are not available. उसके बाद देखिए costly. Decentralization system involves heavily overheaded expenses. Every decentralized division has to be self-sufficient for its activities like production, marketing, accounting, personnel, etc. A number of persons will be employed to manage various activities. First of those persons are paid highest salaries involving huge costs. First of decentralized system is suitable for large scale enterprise only. और इसी के साथ ये चैप्टर जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, सारे नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।